Thank you so much, both of you, to accept this invite and to be part of this conversation on love at Workspace. I'm quite looking forward to learning a lot from both of you. I think the very diversity of this panel, right? We happen to have someone working Madhya Pradesh, Sohini, you work at such a big level at Breakthrough, and also joining from IDR as well. I think it's such a huge diversity of the group itself, which I'm going to find a lot of joy from. The brief given to me is simple. Have fun. Let the panelists have fun with themselves, and also let the people attending also have great fun and joy. So that's what my clear brief is, and I'm going to stick to it. And that's the kind of brief I was quite like. Thank you. Thank you. Hi, Ritesh. Hello, hello. Before we start, I think just to also set up the space, I think Sohini and Ritesh, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है जब आप लव एंड वर्क से सोचते हैं इसके बारे में आप बात बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं यार ये तो बहुत बात कर ली इस बारे में मत ही पूछो मुझसे आज ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहेंगे No, I'm happy to talk about it. I don't think we talk enough about love in the workplace. Absolutely. And the pros and cons and the good and the bad and the many other, things about it. Hello. Thank you so much for joining us again. Hi. Sorry, tech issues. Happens to all of us. Thank you so much, Sneha. I think we'll wait another 1 minute and we should be able to go live then. Sneha, we were just asking all the panelists here in terms of we've all been part of many panels before, and we often ask multiple questions at different forums. What is it one question that you would want not to be asked today when it comes to the topic of love and workspace? This is such a unique topic of conversation. I've never, I don't think I've had any detailed conversations about something like this before in an open space, internally in the workplace, the parallels to what love means in the workplace, of course, when you're trying to figure out values and culture, it comes up. Yeah. But this काफी unique है, so I'm open to any questions. बहुत बढ़िया, that gives me good leeway to also work with them. रितेश, आप कैसे क्या कहेंगे आप? तो ऐसी कोई बात नहीं है प्यार की, मोहब्बत की, जिसको नहीं करना चाहिए. तो मुझे ये तो मतलब सारी बात अभी तक ऐसा कुछ मैंने अभी पिछले 2 मिनट में सोच के भी देखा तो कोई बात ऐसी निकली नहीं कि प्यार से जुड़ी ये बात नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि सारी बात, और ये स्पेस ही नहीं है, प्यार की बात कहाँ हो रही है दुनिया में, तो बात करने की जरूरत है. So बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है मेरे लिए in terms of everything is on the table then. So I can go quiet and take a stretch with all three of you. So thank you for giving me the liberty for that. I think just to set the context for everyone who's joining today, all of us, in some ways, have been introduced to our Elite Forum and CYC. My introduction to the same forum started almost a year back. My name is Siddhant, and I work with a mental health institution called Mind Piper. Quite fortunate to be able to be with Sohini, Ritesh, and Sneha today, who do such remarkable work, which I quite love, and that gives me joy. And as when conversations around Valentine's were quite going to a singularity of a pole of country having a certain singularity of dialogue, we felt at the collective that we should open the space, and what Watari really truly stands for is for the youth, by the youth, and of the youth. And अगर हम ही ऐसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे तो कहाँ हो. इसी एजेंडा से ये एक थीम निकला कि वर्क स्पेस में लव की बात तो होती ही नहीं, और इम्पैक्ट, पर्पस, डेप्थ करना है, स्केल करना है, मिशन है, विजन है, चेंज करना है, वही इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं कि अपना एक मोमेंट ऑफ पॉज लेके अपने लिए वो प्यार ढूंढ पाना और केयर रिसीव कर पाना बहुत ही रेयरिटीज में होता है. तो वही एक कोशिश है कि इसमें हम लोग थोड़ा इस फोरम के थ्रू और बाकी अटेंडेंस के थ्रू भी थोड़ा प्यार महसूस कर पाए और अपने अनुभव प्यार के शेयर कर पाए. I think with that would also like to introduce a wonderful and extreme panel. I think we have Ritesh with us. Was fortunate enough to be with Ritesh in also Change Looms program. रितेश शेडो के संस्थापक हैं और मध्य प्रदेश में बहुत उम्दा काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के राउंड, और म्यूजिक को यूज करते हैं अपने काम में विद ट्राइबल एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के साथ. सो वेलकम रितेश. स्नेहा जो हैं वो आईडीआर में कंटेंट डेवलपमेंट और क्यूरेशन वो लीड करती हैं. जो आईडीआर एक
बहुत उम्दा कंटेंट लिखता है अराउंड द डेवलपमेंट कम्युनिटी, और आई थिंक हम सब उसको बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं. सोहिनी, आपको शाहिरी को योगिंदर ना जानता हूँ, और सोहिनी इज CEO of Breakthrough, and which is a women's right organization. Her passion for gender equity is something which is so powerful and so known to all of us. And without much ado, would like to first express my deepest gratitude to all of you for joining us today in this forum. And would like to open this forum with a very simple question about कि आपने जब वर्कस्पेस और लव की बात होती है, कैसे और कहाँ कहाँ प्यार को अनुभव किया है, और क्या क्या डाइवर्सिटी ऑफ लव आपने एक्सपीरियंस किया है. ये पैनल की सवाल तीनों पैनलिस्ट के लिए, कोई भी पहले जा सकता है. एंड if you could start with, say, in no order, Sohini, with you. So, when you talk about love in the workplace, there are 2-3 things that comes to mind. एक love as a value or as a culture. और मुझे लगता है कि we don't bring enough love into the workplace. हमें love as a culture and as a value workplace पे लाना चाहिए. और workplace में love को लेकर मेरे ख्याल से बात भी होना चाहिए. Yeah? What does workplace love means? Some of the things that I have noticed, and ये मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है और अपनी तरफ से मैं इसको मानने का कोशिश करती हूँ, is there are 2-3 things about showing love in the workplace. One is when you are actually giving somebody else your full attention. Yeah, when you're speaking with people, when you're interacting with people, आपके ध्यान किस पर है, या अपने काम पे है या उस पर है. So that's very important. Smiling, greeting people, not just hello, I hope you're having a good day kind of thing, but just genuinely, you're happy to see people and उसको express करना, मेरे को लगता है that's a very very good part of bringing love into the workplace. Expressing gratitude and appreciation to people, how do you say thank yous, or and again wo superficial thank yous nahi, you really mean and say it. And listen, I mean, I think the greatest expression of love you can show in a workplace in terms of a value or a culture is to listen to your co-workers and listen deep, ना कि नहीं अच्छा आ रहे हो तुम बैठे हो, मैं अपने लैपटॉप पे देख रही हूँ, बातें हो रहा है, मैं सुन रही हूँ मगर मैं सुन नहीं रही हूँ, है ना. So give that full attention and welcome caring feedback कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो can we tell people each other in a caring way rather than in a much more feedback, critiquing kind of a way. So these are things about bringing love into the workplace as a value, as a culture. The second thing is actually love happening in the workplace, and I'm sure we will talk about it much more, and I have lots of thoughts in my head, but some time ago I think somebody told me कि लव तो होना ही है वर्क प्लेस में, क्योंकि वहां पे हम सारा दिन, कभी कभी सारा शाम, कभी कभी सारा रात बिताते हैं, तो where else can I go and find love? So love will happen in the workplace, but there are a certain things about it which we will talk about. So these are the 2 ways I think I see love in the workplace. Thank you so much, Sohini. I think just laid a beautiful base for the conversation to follow. Sneha, आप start चाहेंगे next? बिल्कुल. So I'll take it from the point of view of कि in my experience in workplaces, मैंने प्यार को कैसे महसूस किया है, and what have I valued in my colleagues, in my seniors, and therefore what do I think is important, irrespective of how many years you've been in an organization. What do I feel is really important to kind of what is the value, like Sohini said, what are the values to kind of take into the workplace that communicate love. And I think the big one is support and mentorship and guidance, and taking people with you. And I think I have been fortunate कि जितने भी workplaces में मैं रही हूँ, people have always been supportive, have always truly wanted to kind of
you know, हम बोलते हैं I have your back, you know, that person has my back. So that you're there for each other, irrespective of, you know, seniority and where you come from and what degree you might have. So that is very important for me, I think, and it's something that I think really makes a difference in the workplace. Because like Sohini said, 8 घंटे मतलब minimum इतने लोगों के साथ spend करते हैं, more than probably anybody else, you know. So how can you do it well? How can you enjoy it if you don't kind of take people with you? That's one part of it. And then when I think about love, I think, you know, the other side of love and the foundation of love is respect. So I think being respectful in all relationships obviously is important, but in the workplace, something that has always stood out to me, more so from seniors, जो मैं, you know, role models मानती हूँ, is when that respect translates into the openness to hear everyone, whether that, you know, पहले तो हम इसको equality बुलाते थे, now we are taking equality as a value forward and also thinking about equity. So irrespective of, मतलब आप जितने भी senior हो, जितने भी junior हो, आप सभी के बात सुने, and जैसे कि सोहिनी ने बोला, you know, actually you're listening to them because you believe कि जो भी feedback from everyone is important, you know. Ideas can come from everyone. हमारे workplace में हमारा जो एक co-founder है बोलती रहती है कि good ideas can come from everyone. So I think those are two things that I have benefited from, you know, in workplaces, and I hope to kind of take into the workplace as well. Thank you so much, Sneha. I think quite resonated with all these spoke in terms of just presence with care and compassion, which is something which quite roots love, and being able to create the space of being heard and also being able to voice out what you all really are experiencing. Ritesh भाई, आपसे यही सवाल रहेगा कि in terms of कार्यस्थल पर आपने किस किस तरह के प्यार का अनुभव किया है, और आपका तो प्यार गीत से भी निकलता है, तो जरूर आप बताएं. हाँ, तो जब जीने की बारी आती है तब परेशानी हो जाती है. मतलब कहने में थोड़ा आसान होता है लव का वैल्यू, जब जीना होता है तो उसका भुगतान देना होता है. मतलब काफी आपको कुछ तो भी देना पड़ता है. तो असल में जब शुरुआत जब हमने करी तो मैं बहुत सारे कल्चर देख चुका था, तो मुझे ये बहुत समझ में आ गया था कि हमारी टीम के साथ जब बात करेंगे तो क्या नहीं करना है, तो खुशनुमा माहौल कैसे होगा. तो वो संगीत से ही निकल के आता है. तो काफी लोग अभी हैं ज्वाइन करा हुआ है जिन्होंने जो म्यूजिक के साथ जुड़े, जैसे हिमांशु भैया वगैरह, काफी लोग जुड़े हुए हैं. तो हम तो दोस्ती नहीं थी हमारी, हम तो संगीत के कारण जुड़ गए थे, और संगीत के कारण शेडो बन गया, और संगीत के कारण हम एक दूसरे के घर की शादियों में रात रात भर मदद करने लगे. लोगों के घर बनाने में हम पानी दे रहे हैं तो कोई कुछ कर रहा है. तो ये कैसे हुआ? मतलब इसके लिए तो कोई वर्कशॉप भी नहीं हुई, कोई कुछ हुआ नहीं. फिर ये कैसे अटैचमेंट है? तो बाद में समझ में आया कि संगीत जो फैटर्निटी पैदा करता है वो फैटर्निटी बहुत टिकाऊ है, मतलब स्थिर है, और वो ऐसे आसानी से नहीं टूटती है. तो वर्क स्पेस में जब बहुत सारे म्यूजिक माइंडेड और इस तरह के लोग आना चालू हुए, तो जो म्यूजिक माइंडेड नहीं थे, जो पोएट्री से थे या कुछ और थे, वो भी बहुत इंक्लूसिव माहौल बना. तो यही समझ में आया कि आपको इस तरह के अनुभव के लिए, आपको इस तरह के कल्चर के लिए, आपको लव का वैल्यू हमेशा ही आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है, मतलब आपको कुछ देना भी पड़ता है. तो फिर कोई हो सकता है 11 बजे आएगा ऑफिस, और हो सकता है कोई लेट जाएगा. तो ये सब कैसे मैनेज होगा इस कल्चर के साथ, मतलब इस वैल्यू के साथ. तो एक बहुत प्यारा सा डिजाइन हमने बनाया कि लोगों, मतलब एक होता है कि हम बहुमत करते हैं, क्योंकि बहुमत से चलेंगे. हमको लगा सर्वसम्मति वाला कॉन्सेप्ट करते हैं ना, मतलब फुल मेजोरिटी क्या कहती है वहां पे चलते हैं. तो उससे लव अपने आप पनपना चालू हुआ. तो कई सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं. तो अब हम मतलब उसको एक्सप्लेन थोड़ा शायद कम करते हैं, पर उसको जीने के कारण हमको हमारे व्यवहार में समझ में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी आप दोस्त होते हैं, कभी आप अपनी डेजिग्नेशन पे होते हैं, और शाम को फिर मिल जाते हैं और फिर दोस्त हो जाते हैं. तो ये मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा. लव भी कोई छोटी बात नहीं, बहुत मल्टी डायमेंशनल है, उसमें अलग अलग डायमेंशन है, पर उसको एक साथ रख के चलना, ये बहुत कुछ हम, मतलब लग रहा है हमको कि हाँ, हम बहुत कुछ इस तरह का खुशनुमा माहौल बना पाए, कर पाए, देख पाए. और कैसे मिनिमम प्रोटोकॉल में ये सब चले. तो मुझे लग रहा है कि ये काफी काम किया है ये वैल्यू, और इसके अराउंड सारा म्यूजिक है. मतलब जब
किसी बात पे नाराज भी हो जाता है कोई, तो उसके लिए हारमोनियम और गिटार खोल के बस आपको एक माहौल बनाना होता है और सब मोहब्बत में बहने लगते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश भाई। आई थिंक आपने तो यहाँ पे माहौल एक तरीके से सेट कर दिया है। आई थिंक टू मूव फ्रॉम कि हमने किस किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव को एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग क्या लव नहीं है, आई थिंक उसके बारे में बात भी करना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे जानना चाहूंगा कि हमने ये आइडेंटिफाई कर पाना कि ये प्यार है, जब हमें केयर हो, जब हमें रिस्पेक्ट हो, जब हमारे लिए कोई प्रेजेंस में हो, जहाँ पे हमारे साथ कोई खड़ा हो, वो वर्क स्पेस में समझ पाना तो काफी थोड़ा हमने जाना भी है, समझा भी है। पर लव का एक अलग पहलू भी है। तो आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपके नजरिए में और आपके अनुभव में प्यार क्या नहीं है जब वर्क स्पेस की बात की जाए तो। स्नेहा, आप शुरू करना चाहेंगे? श्योर। आई थिंक जब मैंने कॉइन के दूसरी साइड के बारे में बात की, when I said कि respect is an important part of love, I think disrespecting people is a big no for me, whether you want to see it कि ये प्यार नहीं है या जो भी है। At the end of the day, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, and if you want to be treated well, आप लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर you have to respect them. You have to, it's important to me, I think, that people are respectful in all interactions. So that is I think, disrespecting is a way of not showing love, to keep it simple. रितेश भाई, आपने कहा कि आपने अपनी संस्था में कोशिश करी है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम, और आपने कहा कि सबका अपना अपना नजरिया भी है उसमें। फिर इस माहौल में आपने क्या समझा है और क्या अनुभव रहा है आपका कि ये प्यार नहीं है? बहुत सिंपल मुझे समझ में आती है ये बात कि मैं लोगों से प्यार चाहता हूँ और मैं करने में परहेज करता हूँ। मुझे लगता है ये तो प्यार नहीं है। तो या लोग लोग मुझसे बहुत प्यार, या मैं लोगों से कर रहा हूँ और लोग थोड़ा कम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये शायद प्यार नहीं है। क्योंकि एक बहुत प्यार में एक बेफिक्री भी आती है, और मतलब वही बात है कि कश्तियां किनारों पे ज्यादा इसलिए डूबती हैं क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं। तो बहुत प्यार भी कई बार आपको, एक कहावत है, मतलब ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ कीड़े पड़ जाते हैं। तो जहां लड़ाई नहीं हो रही है, जहां विवाद नहीं हो रहा है, जहां पे जिस जगह पे कुछ डिस्कशन में कुछ कोई दोनों पक्ष नहीं सुने जा रहे हैं, और सहमति और असहमति, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के साथ नहीं चला जा रहा है, मुझे लग रहा है वहां पे प्यार शायद कुछ गड़बड़ है, वहां पे वो होना बहुत जरूरी है। Sohini, would love to bring the same question to you as well, कि आपने जो ये देखा है इस सामाजिक सेक्टर को और एक डेवलपमेंट सेक्टर को, आपके अलग अलग अनुभव रहे हैं। तो किस किस मोमेंट्स आपको लगा कि यार ये कहा तो जा रहा है प्यार है, पर मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा है? Unfortunately, sometimes love in the workplace can go horribly bad. और आज ही मतलब दोपहर को I was listening to a friend where some of these things have gone really awfully bad. And while this week we are celebrating love, we are talking about it, but I think what are those things that can go horribly wrong, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बात करना चाहिए। वो डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, मगर मुझे लगता है दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लव को वीकनेस समझना इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। और बहुत बार मैं ये देख चुकी हूँ कि अगर लीडर की तरफ से लव है तो बहुत को-वर्कर उसे वीकनेस समझती है कि ये तो ये तो डांटती नहीं है, ये तो नहीं बोलेगी, ये तो ऐसे नहीं करेगी, बट सो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, है ना। बट love is respecting you as Sneha said, and showing that respect is not showing weakness actually. तो ये बात सबके दिमाग में होना चाहिए। Second thing is that I think मेरे ख्याल में love in the workplace is a very tricky thing. तो आपको सब कुछ देखकर, बाउंड्रीज देखकर, कहाँ पे हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक चेन ऑफ कमांड होते हैं, कोई हायरार्कीज होती है, नॉन हायरार्कियल होके भी हमें कुछ फॉलोज करना पड़ता है। तो उस चेन ऑफ कमांड में आप कहाँ पे हो,
और तो then how you should behave, you know, I think those are very important things to do. And lastly I think consent, सहमति, जो रितेश भाई ने भी बोला है, सहमति और is a consent is a very big thing in the workplace. क्या आप किसी के साथ consent के साथ आगे बढ़ रहे हो या नहीं, you know, like in any relationship which has love at its center. I think these three things are very, very important to keep in mind. I think just to pick from the same thread just showing आपने भी छोड़ा about consent, would love to take it from and ask each of you कि can love across different generations, when we speak of workspace, be a form of resistance against the norms and power structures of society, and if yes, how? रितेश भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इसी सवाल से कि क्या कार्य क्षेत्र में विभिन्न पीढ़ियों के बीच प्रेम समाज के मानदंडों और शक्ति संरचनाओं के खिलाफ प्रतिरोध का एक रूप हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ और ना भी थोड़ा, मतलब मैं अपनी तरफ से रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुक्त है, प्रेम मतलब बहुत ही मुक्त है, ये शक्ति सत्ता इससे बहुत ऊपर है, पीढ़ी से। तो मुझे लग रहा है एक साथ मिलके बनता है, मतलब कोई एक आदमी या दो आदमी इसको मिलके नहीं बनाते हैं। तो ये हाँ मुझे लग रहा है एक साथ मिलके बनता है, इसलिए प्रतिशोध वाली कोई बात नहीं होती इसमें। ये जरूर समझा जा सकता है कि जब एक्चुअल में प्रेम भी को क्रिएशन का मसला है, को क्रिएट होता है, वो डेवलप नहीं होता असल में, मतलब टर्म में भी समझने की कोशिश करता हूँ उसको कई बार। तो अब कैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई कार्यशाला नहीं हो सकती प्रेम की, वो बहुत मतलब फिर तो ये बात ही गलत हो जाती कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो मतलब प्रेम को पढ़ना समझना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सत्ता हो या, और दूसरी एक बात और कि जब भी आप सत्ता से या पीढ़ियों से या पावर स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो प्रेम बड़ा काम करता है। हम गांधी का एग्जांपल लें या किसी का भी लें, तो हमको लगता है कि नॉन वायलेंस एक तरह का प्रेम था, तो वो बड़ा कारगर है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यार म्यूजिक जो है वो वायलेंस का एंटीडोज है, आपको जहाँ हिंसा दिखाई देती है वहां संगीत वंगीत चालू कर दो, लोग बड़े खुशनुमा हो जाते हैं। मुझे प्रेम का भी यही लगता है कि दुनिया में इतनी नफरतें हैं, आप उसको वो पीढ़ियां हो, मतलब इंटरजनरेशनल डायलॉग चल रहा हो या इंटरजनरेशनल लोग हों, तो भी आप प्रेम की बात करेंगे, मुझे लगता है हर कोई समझ सकता है। तो प्रेम की भाषा बड़ी सरल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें प्रतिशोध या कुछ इस तरह की बात होती है। भाषा कैसी है बस आपकी, वो एक फैक्ट काम करता है शायद। शुक्रिया रितेश भाई। Sohini, would you like to share any your thoughts on how can love across different generations be a form of resistance against the current norms and power structure we're seeing in our society? As Ritesh bhai said, love has no boundaries, generation, age, कुछ नहीं है। मगर वही लव जब वर्कप्लेस में आते हैं डिफरेंट जनरेशन की बीच, और वो प्लेटोनिक लव नहीं है, वो रोमांटिक लव होती है, तो उसमें बड़ी सारी चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यू हैव टू थिंक ऑफ द रिस्क्स। हाँ, कि ये अगर मेरी टीम में है और इनके साथ मेरी कोई अफेयर चल रही है, would anything I do will be seen as favoring that person. So how do we and especially if it's somewhere higher up in the organization, वो उसका अल्टरनेटिव नैरेटिव बनती रहेगी, उससे आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आपकी इंटेंशन क्या है? कोई कबार लव बोलकर हम बहुत सारी इंटेंशन को, जैसे रितेश भाई ने बोल रहे थे कि रिवेंज या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए उसके अंदर, मगर आ जाती है। दैट्स द ट्रूथ। वर्कप्लेस में लोग कभी कभार एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, मे बी टू climb up the ladder, or maybe to just get the best for yourself, or maybe just easily available somebody, and और वो पावर डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके साथ आपकी संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई कबार there is a relationship where somebody cannot even say no. वो पावर स्ट्रक्चर में वैसे ही है जो cannot say no. So I think you have to be very very careful. और बाउंड्रीज क्या है within the workplace? आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे? You can take it out of the workplace,
कहीं पे भी, मगर विद इन द वर्क प्लेस आप क्या करोगे, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगती है वो दूसरों को अच्छा नहीं लग सकती है। तो ये चीज होती है, इंटरजेनरेशनल लव हो या इन जनरेशनल कोई भी हो, ये सब चीज में ध्यान देना पड़ती है। और मैं 30 साल से इस सेक्टर में काम करती हूँ, तो मुझे बहुत सारा चीज देखने के लिए मिला है। और आर्ट सेक्टर, I mean, I have seen great love, within the sector, but I've also seen people taking advantage of that love. So, Shoni, would you also take and share us a story of love that you have experienced? I think it's also important कि हम लोग कहानियों के बारे में बात करें। कहानी से बेहतर क्या जरिया है प्यार को समझ पाने का? You like to share any story of love? मेरा तो लव की दूसरी वाली स्टोरीज बहुत सारी है। I think वो वाली भी सुननी जरूरी है, because the 3 words which are staying with me when I was listening to you is thoughtfulness, caution, and also in terms of boundaries, Yes. boundaries of self and boundaries of others, and respect for that. पॉलिसी भी हो सकती है, कभी कभी कोई कंपनी की पॉलिसी हो सकती है that if you have a romantic relationship within the organization, then you'll have to leave the organization or something like that. तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। But no, I mean, not just a story, but I've seen, and I'm sure it's here in our generation also, but people from older generation of people who've been in this space, I've seen an enormous love given to people in order for them to learn about the work. When I was a fresher in this space, तो बहुत सारे गांधीयंस होते थे ना, वो बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते थे जो इस क्षेत्र में आए। तो the love that they showed to young people, asking their opinion about, मैं एक फ्रेशर थी, मैं दिल्ली में एक बहुत पावरफुल मीटिंग में गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और in between the meeting someone turned to me and said, आपका क्या राय है? मेरा राय क्या हो सकती है? This whole space of democracy, learning in a democratic way, ये सब हमारे अगली पीढ़ी से आए हैं। But unfortunately, I have seen the other side a lot as well. So I'm very cautious about love in the workplace. So as such. Thank you, Shani. Sneha, in many ways, the idea is the voice of the development sector, and it is the platform which is in many ways amplifying the narratives and the stories from the same sector itself. How have you seen love being that as an agency or a platform to really be able to act as a resistance against the norms of power, or how have you exercised it? So रितेश भाई और सोहिनी ने दोनों रोमांटिक लव के बारे में काफी अच्छी तरह से बात की है, वर्क प्लेस में. तो maybe I will talk about it more from the perspective of love as a value that you take into the workplace, and the more platonic understanding of love, and I think there's huge relevance to the many aspects of love. If I think about love, I think about kindness, compassion, Samantha, respect, all of the themes that we've been talking about. That's what I think about. That's what comes to my mind. And I think all of those values and behaviors can go a long way in like bridging the gap between generations, but also pushing back against certain norms. तो हो सकता है कि कोई जो है बहुत साल से सेक्टर में है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, but can they welcome somebody who's new and their opinions? ऐसे भी हो सकता है कि कोई फ्रेशर है जो मतलब you're young, you're so confident, you come into the space, you're like मुझे सब कुछ पता है, it's a new generation, what do you know? Your time has passed, and but can that person keep an open mind and say that actually there's it is a changing world, but there is a lot to be learned from what has come before us as well. And can you take that into the workplace every single day? And then if you're somewhere in the middle, like I am, I think it's keeping both of those perspectives in mind. And I think IDR may the way, because हम चाहते हैं कि in some ways we are a voice for the sector, कि जो भी है सेक्टर में, आप हो सकता है कि आप फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं,
जो भी है, there is a perspective there is a point of view there that is valuable and can be shared and should be shared and that others can learn from. तो हमारे लिए वो बहुत ही important है. And I think that is something that we try to do, in the work that we do. We try to say that, everyone in this space is valuable. तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? What can we put out on them from their side? Thank you so much. I think the 2 to 3 of you together in terms of talking about romantic love and platonic love and how love as a value can something which makes just the culture and the place of work so alive. And also through also experiencing care, I think it's something which all of us need, right? The kind of work that we all do is something which in many ways takes a lot of us. And we also need individuals around us to be able to replenish that, whether it be in terms of love, which is through a peer, love towards a funder, by they hearing our voice and to be able to give us the freedom to do and to be able to take those experiments and take those big bets. I think that's all the signs and symbols of love. Shwani, would come back to you and love to ask you in terms of आपने अपनी जर्नी में कैसे इस लव को, चाहे वो प्लेटोनिक हो, रोमांटिक लव हो, आपकी जर्नी को कैसे इनेबल करते हुए देखा है और कैसे हिंडर करते हुए देखा है इस लव को, बोथ रोमांटिक एंड प्लेटोनिक लव को? I mean, taking from Sneha's, love as a value, I've tried to, in my first of all, as an individual, in my behavior, I've tried to follow the values of love and respect and, and being democratic, trying to break the power structures wherever I have been myself, because love is a big part. Power structure is a big part of love. Yeah? Be it relationship with funders, as you said just now, I've seen, how love can play out there as well, or cannot play out there as well. Sometimes, this relationships are so open, so loving, so much caring for the same things, हमारा एक mission है, and then how the funders also then buy into that mission, and that's a moment of great love. The other thing that I have, so in my own personal journey, I have always tried to follow that. In organizations where I have had the say or where I've had the ability to bring in, I've also tried to bring in love as a value, as something that is in the culture of the organization, in the environment of the organization. Love as a value has been very, very important for me. And third is where the learning comes, love between, peers in the in the sector, not just, within my own organization, but मेरे 4-5 में जो organization है, मेरे चारों और जो organization काम करते हैं, हमारे मुद्दों को लेकर काम करते हैं, दूसरे मुद्दों को लेकर काम करते हैं, उनसे मैं कैसे what is the relationship with them, and in many cases it has been a relationship of great love where people have, rallied around you to help you, or you've rallied around somebody to help, you've learned from each other, you've taken from each other, you still do, you continue to do that. तो वो एक third dimension होता है organizations को कैसे कर सकते हैं. And then I have seen the other side as well, when there is a power dynamic between organizations and there's no love really. Even if you talk about love, there is not really any love. So it's a balancing, it's a balancing act. How much love is good and how much love is then, as I said, looks like weakness to others. You have to always kind of balance your way through it. Thank you, Shwani. Sneha, would you like to share in your own experience about how has love been something which has enabled you or has hindered your journey at this different strata of work you've been involved in? Yeah, I think enabled के बारे में already थोड़ी सी मैंने बोली है, so I will talk about the other side now. So 2 things. I mean, one is, we all, most of us, I think, come into this sector because we are passionate about something, It's a form of love that brings us into this work.
हो सकता है, मैंने देखा है, I have also kind of, this has happened to me personally as well, where you get so invested in the cause, आप इतना पैशनेट हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि शायद आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं. तो हाउ डू यू टेक पीपल विथ यू, यू नो, टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मिशंस है, सभी प्रोजेक्ट्स के टारगेट्स है, आउटकम्स है. You know, you know, we have to think about scale, we have to think about the board. There's so many things that you are doing at an organization, but how do you take people with you in a way that is sustainable, you know, that they don't get burnt out, and that you're not so single-mindedly focused on your goal कि बाकी सब भूल गए और फिर everyone, you know, everyone is burnt out and doesn't want to be part of kind of your organization or your team anymore. So I think that's a really important part to think about, and it starts with the self. You know, आजकल तो self care हम बहुत बोलते हैं. It's very trendy to talk about self care. But I think there's a reason for that. You know, हम इतने सारे passion में अगर काम में जाए और बाकी के सब भूल जाते हैं, तो फिर उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स है अपने आप पे, हमारे फैमिलीज पे, हमारी टीम्स पे. So keeping the perspective, you know, and sometimes it goes wrong before it can go right, and everyone, and also being compassionate if other people are, you know, just because now that has been my experience and I can say, oh, I've gone through that journey. Being compassionate when someone else is going through a similar journey of understanding how to manage passion sustainably. So I think that is important to think about and be mindful about. Thank you so much, Sneha. I think that is so true in terms of burnout and care when you speak of, and also this another pillar of the wage and the salaries in the workplace, in the development sector. जो लव के लिए और पैशन के लिए नजरिए में कई बार कहा था कि ठीक है, सैलरी के बारे में कितना क्या बात कर रहे हैं, अभी तो एक लव का एक्सप्रेशन तो क्या आपको प्यार मिल रहा है, तो सैलरी छोड़ दो थोड़ी. I think that's also a way of how also it hinders someone's journey. I often experience it. रितेश, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कैसे अनुभव किया है प्यार को आपकी जिंदगी में और आपके काम में, आपको इनेबल करते हुए या आपको बाधित करते हुए किस तरीके में? तो मतलब दुनिया के बहुत खूबसूरत लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं. तो एक तो मतलब मेरा कोई भी काम या कुछ भी ऐसा लगता है तो मेरा तो खत्म ही हो गया पिछले 7-8 सालों से, वो हम सबका हो गया है. तो मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जरा सी बात पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मेरी परेशानी लोगों की हो जाती है. तो दुनिया में मतलब ऐसे लोग कहाँ हैं. वही मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब मैं नेगेटिव बहुत साल से देख नहीं पा रहा हूँ कि लोग खराब हैं. मतलब अभी भी हमने एक बड़ा इवेंट करा, इतने प्यारे प्यारे लोग आए और आके मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि खराब लोग कहाँ हैं. मतलब मैं धीरे धीरे इस बात पे मेरा यकीन बन रहा है कि खराब लोग होते नहीं है अमूमन, और मुझे लग रहा है ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये विचार बन जाएगा कि आसपास. अब रही वर्क स्पेस की बात, तो वर्क स्पेस में मुझे लग रहा है कि प्रेम जो है वो एक कार्यस्थल पे वर्क स्पेस में एक पढ़ाई जैसा है, और उसकी किताबें लोग हैं आसपास, जहाँ हम लोग जो हमारे आसपास घूम रहे हैं. अब उन लोगों में ना हर किसी में प्यार का एक अंकुरण होते रहता है. वो अंकुरण को पकड़ना होता है मुझे लगता है. वो आप जब पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्यार अगेन डेवलप करने की चीज नहीं, वो नर्चर होता है. एक बीज की ताकत होती है और एक इंसान की ताकत होती है. वो पानी डालता है और बीज की अपनी ताकत होती है, तो वो फलता फूलता है. सिर्फ बीज अकेला ही नहीं हो सकता, उसको पानी देना पड़ेगा. तो प्रेम बिल्कुल वैसे ही है वर्क स्पेस में, कि वो अंकुरण कहाँ करना है, और वो जो किताबें घूम रही हैं हमारे आसपास उसमें प्रेम कहाँ पढ़ना है. तो मैंने वो काफी एक्सपीरियंस करा. तो मेरे आसपास जितने लोग होते थे मैं उनमें प्रेम ढूंढते रहता था कि इस कोने पे है, और फिर मैं उसी कोने पे पानी डालने की कोशिश करता था, तो वहां से फिर वो और बढ़ जाता था. मुझे लग रहा है वो एक, और फिर प्रेम में एक कमिटमेंट भी है. तो अब जैसे लोग काम को लेके, मतलब अगर आपका काम से कमिटमेंट है तो वहां प्रेम नहीं हो पाएगा, पर आपका कमिटमेंट प्रेम है कि इस काम से ही मुझे प्यार है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा काम करता है. तो हाँ, बस यही 2 बातें मुझे वर्क प्लेस पे और इंडिविजुअली समझ में आती है. आई थिंक आपने एक बहुत सही बांधे इससे पूछते हुए के लिए कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग वर्क प्लेस कल्चर के बारे में बात करें, आई थिंक आप सबसे दो चीजें जानना चाहूंगा कि जैसे रितेश ने कहा कि बीज की क्षमता है और उसमें पानी दें तो एक अलग ही चीज उसमें मिल जाती है. तो आप सबसे एक तरीके से फाइनल सवाल पूछना चाहूंगा कि जिससे हम पहले रैपिड फायर में जाएंगे इसके बाद, कि वर्क प्लेस और कल्चर की बात करी जाए तो क्या चीजें हैं जो एक हेल्दी सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप ऑफ लव को रियली फ्लरिश करने में हेल्प कर सकती हैं आप सबके लिए? 2 चीजें बताएं जरूर.
how can we create a workplace culture that fosters healthy, supportive, and respectful relationships of love of all kinds? Um, Sneha, आप शुरुआत करना चाहेंगे? Any two things that come to you instinctively? I'll just say two things: kindness and respect. Lovely. Love those two words. Ritesh, आपके लिए क्या है ये दो चीजें? हाँ, मुझे लग रहा है एक कमिटमेंट, दोनों साइड का कमिटमेंट मैं कह रहा हूँ, जो अभी मैंने जिक्र भी करा, एक कमिटमेंट उस काम के लिए और खुद के लिए, तो प्रेम अपने आप बढ़ता है। और दूसरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, कोशिश, वो एक सबसे बड़ी चीज है। कोशिशें ही तो नहीं होती हैं, वहां पे जाके सब रुक जाता है। तो कोशिशें शायद, और खास करके वर्क स्पेस में कई जगह बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वहां से सीखने की जरूरत है। कोशिशें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। शुक्रिया। सोहिनी, आपके लिए क्या होंगी वो दो चीजें? एक तो compassion with respect. As Sneha said, I'd like to add compassion in it because no one wants to, walk into a workplace and feel that their emotions don't matter there, है ना? तो वो compassion बहुत important चीज है, because there is, research to show that compassions actually make people work better. Curiosity in each other, interest in each other is very important to build a good relationship, in the workplace. So that's one thing. I will, probably say three things. The other thing is care and concern. Caring for, employees, colleagues, supervisors. And it works both ways, everybody, for everybody. If there is, if somebody is ill, somebody calls that person up. So, chote cheese mein, showing the care and concern, not just talking about it, giving maybe extra leave or giving unpaid leave if the need arise. So those are some of those things that. And the third thing I feel is mentorship, क्योंकि किसी को अपने मेंटोर की तरह देखना और किसी को अपने मेंटर की तरह मेंटोरशिप देना is something that is very important, because as individuals, our human nature is very open to, sharing what we know with others. So being a mentor means that you're seeing a promise or a potential in another person. You're taking that person under your wing, and also that person is looking up to you, to help that person, support the work, support in the work that you. So I think mentorship is a very way of, love working both ways. So those are the three things that I had in mind. Thank you so much each of you. और अब हम लोग एक रैपिड फायर क्विक राउंड में जाएंगे, इसको हम लोग सेक्शन का नाम रखते हैं, क्या आपने कभी प्यार किया? So I think quick words जो instinctively आप सबके दिमाग में पहली चीज आए उसका जरूर शेयर कीजिएगा. I think we'll go in the specific order. Sohini, Sneha, Ritesh, पहली चीज जो दिमाग में आप जरूर बताइएगा. So what's that one compliment? क्या एक अच्छी ऐसा compliment आपने receive किया है which brought most joy to you? You are an inspiring person. स्नेहा, आपके लिए क्या है वो कॉम्प्लीमेंट जो आपके लिए बहुत जॉय लाया, जो आपने सुना अपने लिए? I'm blanking. Hopefully that. I think people appreciate that I take the time to listen, and in different forms, when that's been acknowledged, I have that's been very fulfilling for me. रितेश भाई, आपको तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, आपको क्या है जो बिल्कुल याद आता है एकदम से जब इसके सवाल करने में आता है? क्या है कॉम्प्लीमेंट जो को जॉय लाता है आपको बहुत सबसे ज्यादा? तुम इतनी दोस्ती स्टोरेज कैसे कर लेते हो? अरे Sneha, we're going to set the next round of rapid fire with you. What is that one compliment that you received at work which made you uncomfortable? People have told me that they like my voice. कभी-कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है उससे. Great. रितेश, क्या था एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा सुन के? आप चले जाओ, आपकी वजह से हम मस्ती नहीं कर पाते हैं. कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा है. Shani, how about you? You don't look as old as you are. How does one respond to that? I would never even know. So Shani, the next one for you is, should employers discourage or even prohibit workplace relationships? A yes or no?
No, how can you prohibit anything like that? No. Perfect. No, great. रितेश, आप क्या कहते हैं? क्या एम्प्लॉयर्स को डिस्करेज या प्रोहिबिट करनी चाहिए वर्कप्लेस रिलेशनशिप्स? बिल्कुल नहीं। स्नेहा? No. एकदम कंसेंसस है, बहुत बढ़िया। आई थिंक अगले सवाल हम रितेश आप स्टार्ट करते हैं कि आप कभी किसी से अट्रैक्ट हुए हैं टू समवन एट वर्क प्लेस, और क्या आपने उसका इजहार किया है? हाँ, इजहार नहीं किया। इजहार नहीं किया। सोहिनी? हाँ, इजहार नहीं किया। स्नेहा? Yes, I actually met my husband through work. We were not in the same workplace, but we met in a work setting. So yes. Lovely. I think the final one for you is in terms of Salsa with Sneha. Amongst the people that you've crossed paths at work, who would you really like to ask out on a date? I fangirl about a lot of the people who write for IDR. So I'm Who's not that one going person? to take names. No, I can't. That would, because there's so many, there's so many. So we meet such wonderful people. We're so lucky because our job allows us to do that. And there are too many to name, and I wouldn't be able to do it justice. Great. We will certainly respect that. रितेश, आपके लिए कौन है जो अपने जिनको आप डेट पे ले जाने के लिए पूछना चाहेंगे? तो वर्क स्पेस की बात चल रही है, मैं कोई भी विवाद नहीं चाहता, तो मैं सबको ही लेके जाना चाहूंगा। ये अनफिल्टर्ड था, तो विवादों से डरते नहीं है, अपने प्यार के इजहार करते हैं। तो कौन है जिसको आप ले जाना चाहोगे? तो मधुर मेरे साथ रहता है हमेशा, और वो बहुत क्लोज है मेरे, तो मैं उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं मधुर को लेके जाऊंगा। Shoini, how about you? Someone you've crossed paths at work and who would you really like to ask out on a date? Well, in my organization, there's so many young people who are just fantastic. Maybe every one of them, actually, it would be great to actually take on a date. And some of the women, they're so great, so fantastic. So yeah, lots of people. I think I'll ask one final question before we close. Is we've talking about when we started this conversation, हम सब लोग अलाइनमेंट में थे कि वर्क स्पेस और प्यार की बात होती ही नहीं है। आई थिंक हमने एक शुरुआत करी है। आई थिंक यहाँ पे जरूर आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपकी होप क्या है आज थर्सडे इवनिंग पे हम लोग जब बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू होप फॉर टू हैपन मोर ऑफ एट वर्क स्पेसेस इन द एरिना ऑफ लव? व्हाट इज योर होप? That that love as a value and a culture actually becomes actually happens. You really need love in the workplace. So how can we really build it as a culture and a value in the workplace? And I'm hopeful that we can actually build it as a culture and a value in the workplace. All you need is love, right? Sneha, how about you? My hope is that we can have open conversations with an open mind. I think that's a starting place for any kind of wholesome relationship. Ritesh भाई, आप क्या चाहेंगे? मेरी तो यही आशा रहती है, और मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि कुछ ऐसा सब लोग निकालें कि जहाँ पे एक आध दिन थोड़ा प्यार व्यार का ही हो जाए और उसकी बातें ज्यादा हों, क्योंकि जब तक मोहब्बत कमरों में रहेगी तब तक नफरत सड़कों पे, तो फिर क्या करना होगा? तो ये करना होगा कि उसका दिखना भी जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा दिखे मोहब्बत। तो मैं रितेश भाई की शब्दों से ही अंत करना चाहूंगा कि जब तक प्यार और मोहब्बत कमरों में रहेगी तो नफरत रहेगी सड़कों पे। और जो सब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल को, और हम सब भी जरूर कोशिश करें कि हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को इस इंस्टाग्राम लाइव पे ही ना रह जाए, हमने अपने काम पे अपने आसपास भी लेके जाएं। और ये जो वार्तालाप फोरम है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके ज्योग्राफी एरिया में काम करती हैं। अगर आप चाहेंगे कि इनसे और बात करें, इनके काम करें और जानें और कैसे प्यार को आप अपने खुद के वर्क प्लेस में ला सकते हैं, जरूर रीच आउट करें वार्तालाप और CYC फोरम से। और बहुत सारी फिफ्थ स्पेस में इनकी हमारी वीडियोस भी हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कॉन्वर्सेशन में अपने आप को एक पूरा
ओपननेस और वल्नरेबिलिटी से एक्सप्रेस कर पाने का और अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स हम सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर हमारा भी शुक्रिया सिद्धांत, तुमने इतने मतलब गहरे टॉपिक को इतनी मोहब्बत से हम सबसे पूछ लिया और सारी बातें हो गई। थैंक यू। Thank you, Siddhant. Thank you, Ritesh bhai. Thank you. Thank you all. It's been wonderful. Thank you everyone. Bye bye. Bye.